how many of you remember that we started horizontal projectile and we have read about equation of projectile? Yeah, ये वाली equation of trajectory हमने already कर लिया. What is equation of trajectory? How do you calculate the relation between y component and x component of the projectile motion? Okay, and कुछ questions भी किए थे हमने. Yes, we have done equation of trajectory. Horizontal projectile भी we have started already. Horizontal projection हमने start कर दिया था. I have told you कि horizontal projectile में होता क्या है? A person is standing at the top of a tower and he throws a ball in horizontal direction, and then in this case the ball is only having velocity in horizontal direction and no velocity in vertical direction, है ना? जब उसने बॉल को horizontally फेंक दिया तो बॉल की जो वेलोसिटी होगी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी. तो u cos थीटा u x velocity is u cos theta and u y velocity is 0. ये केस होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का. याद आ रहा है कुछ आप लोगों का गैप हो गया तो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से किसी ने कुछ रिवाइज किया नहीं होगा, तो जस्ट फॉर दैट सेक. ये इतना पतला कैसे हो गया भाई? चलो, मार्कर ही मुझे पतला लग रहा है, पता नहीं मुझे ही लग रहा है. क्या पढ़ा हमने? ux इक्वल टू यू कॉस थीटा होता है हॉरिजॉन्टल केस में, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में यू वाई आपका 0 होगा. क्यों 0 होगा? आई होप आप सबको क्लियर है. यू वाई विल बी 0 because you have thrown the ball only in horizontal direction. Okay, and there is no velocity in vertical direction. ये देखिए ऊपर नीचे कोई velocity नहीं है. There is no velocity in vertical direction whatsoever. That is why the uy, the y component of velocity, vertical component is 0. Okay, now we calculated time of flight, range. How did you calculate time of flight? I explained to you that this case is similar. देखो, this case is exactly similar when you drop a ball from a height h. Okay, motion in a motion straight line chapter में हमने किया था motion straight line. What we used to do in third chapter, we used to drop a ball from h height, and then the time of flight used to come out to be equal to under root 2h by g. So it is same in this case as well, because you are dropping the ball from some height h. ठीक है, h height से आप इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि आप ड्रॉप कर रहे हो, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल में फेंको और वर्टिकल में कोई वेलोसिटी ना हो तो वर्टिकल के रिस्पेक्ट में, वर्टिकल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में तो आपने ड्रॉप ही कर दिया. तो जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आएगा वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा किससे? जब हम बॉल को बिल्डिंग से खड़े खड़े ड्रॉप करते थे, उस केस से एग्जैक्टली सिमिलर होगा. तो कैसे करते थे? आई गेस उसका डेरिवेशन है आप लोगों के पास ना. ये टाइम ऑफ फ्लाइट t = अंडर रूट 2h by g. y को 0 ले लो बेटा, y को 0 ले लोगे uy is 0, acceleration y direction is equals to minus g. Okay, and the displacement in y direction will be minus h, displacement minus h होगी. And then put the values. मैं क्या समझाऊं, दिख रहा होगा आपको, मतलब करा हुआ है आप लोगों ने पहले ही. Just for the revision, you will put the value and you will get the answer. तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद what you have? टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद रेंज है. हाउ डू यू कैलकुलेट रेंज? नाउ इफ आई आस्क यू हाउ डू यू कैलकुलेट रेंज, इसमें रेंज इज व्हाट? योर horizontal distance. Range का मतलब क्या होता है? What is the meaning of range? Range means horizontal distance covered by the projectile. So how do you calculate the distance covered? Speed into time. What is the speed in horizontal direction? U cos theta. And what is the total time of flight? Under root 2h by g. है ना? Under root 2h by g. So what will be your range? What will be your range? U cos theta, or not U cos theta to be precise. It should be U into t, which is your time of flight. This is what your time of flight. समझ में आ रहा है ना? रेंज को कुछ नहीं करना. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी है, उससे अगर आप अपने टोटल टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी रेंज निकल के आ जाएगी. ये तो इतनी बार कर चुके हैं, आपको मुंह जुबानी याद होगा कैसे करते हैं. रेंज का फॉर्मूला भी आप लोगों को दिखा दिया था. कहाँ है? इस स्लाइड पे. ये देखिए, रेंज इज इक्वल टू u इनटू अंडर रूट 2h by g.
ठीक है. What is the speed in horizontal direction? U. Okay, speed in horizontal direction is U, and that time of flight is under root 2h by g, so range will be U into under root 2h by g. And apart from this, what else is left? Time of flight हो गया, range हो गया, velocity at a journal point. Velocity at a journal point x, y. ये देखो यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी एट अ जर्नल पॉइंट x, y. How should we do this? इसको तो फिगर बना के समझाना पड़ेगा आपको. वेलोसिटी एट जर्नल पॉइंट p. ये कराया दिया था मैंने ऑलरेडी, समझा रहा हूं जो. आज तो कोई बोलो, आज किसी को याद भी नहीं है क्या क्या हो गया था क्लास में. है फायदा उठा रहे हो, मेरे को याद नहीं है तो. है देखो, किसी भी दो पॉइंट पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे मोशन में, एक vx सॉरी एक vx होगा, एक vy होगा. एक vx होगा, एक vy होगा. और अगेन ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा. यू एवरीवन नोज दिस. ठीक है. नाउ इफ यू इमेजिन द मोशन ऑफ द बॉल, ये h हाइट है, this is height h. यहां से you have thrown the ball like this u, so ball will go or follow a parabolic path like this. Okay, so velocity at any point p or q or r, ठीक है, at any point p, q or r, how will you calculate velocity? What will be your horizontal velocity? This will be your horizontal velocity, vx. This will be your, not this, तो line टेढ़ी बन गई. This will be your vertical velocity, vy, and this will be your net velocity, v net. ठीक है. नहीं, किसी भी पॉइंट के लिए कर सकते हैं, r के लिए भी कर सकते हैं, p के लिए भी कर सकते हैं. Now you all know that vx is given to you as u. vx आपको u दिया हुआ है. Okay, you all know vx is given to you as u. What is vx? Horizontal, velocity in horizontal direction, that is given to you as u. Now you want to calculate the velocity. What is the value of vy? आपको vy तो calculate करना है. So how will you calculate vy? Vx, so you all know that vx is equals to u. Now what is your vy for y direction? Look here, for y direction, देखो y direction के लिए कैसे निकालोगे आप. ये भी आपको करा रखा है बाय द वे मैंने. I remember now कि मैंने आपको सिखा रखा है. ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में मैंने आपको कराया हुआ है. देखो, uy इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0. uy क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ये 0 है. What is ay? Ay is acceleration in y direction. Ay is acceleration in y direction, that is equal to what? Your minus g. Okay, and time of flight is equals to under root 2h by g. So how will you calculate the final velocity vy? अगर मैं बोलूं final velocity capital V is equals to initial velocity uy plus a into t. ठीक है ना. What is the uy value? 0, and a value is minus g into t. So what is the final value of your vy? Minus gt. ठीक है. अब आप एक बात बताइए, v net कितना होगा अगर vx इज इक्वल्स टू u है और vy इज इक्वल्स टू माइनस gt है, तो व्हाट विल बी योर v net? v net कैसे निकालेंगे आप? सिंपल है सर, वेक्टर फॉर्मूला. डू यू गाइस रिमेंबर वेक्टर फॉर्मूला? ये देखिए, vy इज इक्वल्स टू uy प्लस gt. uy plus gt. Now vy value came out to be minus gt, vx value is u. So velocity at any point p or net velocity will be simply the addition of the components inside a square root. Square root के अंदर अब इन दोनों components को जैसे हम वेक्टर components को ऐड करते हैं, velocity is a vector quantity, तो उसके x component का square plus y component का square root के अंदर आपको कैलकुलेट करना होता है to calculate the net velocity. तो वो सेम चीज है, u square plus g square t square and inside the root. So I hope this third point is also clear to you. The horizontal range, मतलब clear तो क्या, revise हो गया आपका, is there, time of flight is revised. Now you are in the flow. कुछ पुरानी बातें याद आ गई, अगर भूल गए होंगे तो. Good evening sir, sorry for the late.
Good evening, sir. Sorry for the late. Okay, Prasanna, no problem. No problem. But did you guys get a refreshed version of everything? पुरानी बातें सभी को वापस याद हो गई? Malini saying yes. Also, what about others? Revise हो गया पहले का? Trajectory equation कैसे निकालते हैं? Do you know how to calculate trajectory equation? इस केस में ट्रैजेक्टरी इक्वेशन कैसे निकालोगे? ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं. इसको भी रेस कर देते हैं. ट्रैजेक्टरी इक्वेशन भी आपको करा देता हूँ. हाउ विल यू कैलकुलेट ट्रैजेक्टरी इक्वेशन? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ट्रैजेक्टरी इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. कंफ्यूज मत हो जाना कौन सा केस पढ़ रहे हैं हम. वी आर स्टडीइंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. सो ट्रैजेक्टरी इक्वेशन in case of horizontal projectile we are studying. What is trajectory? I hope you remember, guys. Trajectory, what was trajectory? Path followed, the type of path followed. Okay, so if this is the case that this is the building, okay, this is the building of h height. A man is standing at the top like this, and he has thrown the ball in vertical direction with velocity u. So the ball will go like this. Now this is the path. This is what I have drawn. This curve is the path of the ball. This is ground, this path of the ball. Now we need to calculate the relation between the motion in x component and y component. Okay, कैसे करेंगे? How will you calculate a relation between x component of the motion and y component of the motion? Trajectory basically means to calculate the path followed by the particle. How will you calculate the path followed? If you calculate the relation between the motion in y direction with the motion in x direction, you can calculate the path followed by the particle. So carefully यहाँ पर देखिए, x direction में I am writing some predefined things. x direction में क्या क्या है? x direction में already क्या क्या है? You know that the velocity in x direction, initial velocity in x direction is equal to u. Acceleration in x direction is equals to 0. And the displacement in x direction, this is displacement. Displacement in x direction is equal to, let's say, what? X कह लेते हैं. Suppose displacement in x direction means your range. This is your range. Okay, let it be equal to x. What is displacement in horizontal direction? It is equal to range of the projectile. And we have suppose the range of the projectile is x. Okay, and the time taken by the projectile is, you don't know, let's suppose t. Time taken is t. We are just trying to prepare a general equation. हम एक equation बनाने की कोशिश कर रहे हैं सारे predefined variables लिख करके. तो उसमें से कुछ वो मत याना कि सर टाइम और रेंज की वैल्यूज पुट करो, कि वैल्यूज हमें पता है, फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं. x is equals to u into √2h by g and time of flight is √2h by g. So but we don't need to put here. Okay, I can write range is equals to displacement is equals to speed u into time t, and I can also write time t is equals to what? X by u. This was the case in x direction. Now we'll see y direction. देखो y direction में क्या हो रहा है. Come to the y direction, motion which is happening in y direction. What is happening in y direction? uy is equals to 0. What is ay? Ay is equals to minus g. Okay, sy is equals to displacement in y direction is equals to minus h. Okay,
and time of flight is equals to your time t only. So if I'll write an equation, sy is equals to ut plus half at square, you will write minus h here. Okay, you instead of u, you will put 0. U is equals to what? Your 0 into t plus half minus g, half into minus g and t square. So finally minus h comes out equal to minus half g t square from here. And if you'll put the value of t, put this value of t in this equation, if you put this value of t in this equation, you will get minus h is equals to minus half g x square by u square. This minus and this minus can get cancelled. So your final equation of trajectory is h is equals to half g x square upon u square. For a convenient, आप इस h को y लिख लो. For a convenience, you write this h as y. Okay, this h as y. Okay, displacement in y direction, let it be minus y, because you will ultimately you have to find the relation between the variables y and x. अगर मैं h लिख दूंगा तो y और x के बीच में relation थोड़ी आएगा. If I'll write h, I won't get relation between y and x. So the equation should be in the form of y and x. So I've changed the x to y. Instead of denoting the height of the building with alphabet h, you denote it with alphabet y. So y is equals to half gx square upon u square. That's how you can form the equation of trajectory for this case. Horizontal projectile के लिए equation of trajectory ऐसे बना सकते हो. ये देखो ये equation आ गई. This is your equation of trajectile बोल गया मैं. Trajectory. Equation of trajectory in case of horizontal projectile. What is horizontal projectile? Projectile which is projected from some height and the speed to the ball is given only in the horizontal direction. That case is called your horizontal projectile. So these are some of the things in horizontal projectile. Now, I hope you all understood this. आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया ना कैसे निकाला हमने. एक quick response मेरे को दे देते. Everybody, just a quick response if you can give. Deepika is there, Malini is there, Prasanna is there, Satyam and Juveria. Okay. Did you guys don't understand कैसे calculate किया? नहीं सर, इतनी जल्दी थोड़ी समझ में आता है. अरे बाबा समझ में आया. Did you guys understood? Nobody is responding. क्या हो गया? Okay, they are finally responding. Juveria is saying yes. सर रिपीट कर दो. बिल्कुल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक बार वो इफ यू वांट क्या दीपिका, एक बार माइक ऑन कर लो सो दैट मैं प्रिसाइजली आपको ना चेक कर पाऊँ वेयर डू यू हैव प्रॉब्लम. जस्ट गिव मी अ रेज रिक्वेस्ट फॉर माइक रेज. ठीक है, जल्दी हो जाता है उससे. समझ पाता हूँ ना मैं कहाँ दिक्कत आई, तो फिर उतना ही पोर्शन रिपीट करना पड़ता है, वरना भी पूरा रिपीट करना पड़ेगा. जल्दी से. हाँ दीपिका. दीपिका आपको आवाज आ रही है? प्रश्न पूछिए. दीपिका इज नॉट टॉकिंग टू मी. दीपिका इज टॉकिंग टू यू. दीपिका क्या हुआ? अरे स्पीकर की वॉल्यूम 70, 80, 85 कहां तक पहुंचवाओगी? बोल तो लो.
इतने भी खराब नहीं है मेरे लैपटॉप के स्पीकर्स। अमेजिंग, शायद कुछ तो एरर है। ओके दीपिका देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैजेक्टरी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये रिकॉल करना पड़ेगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ट्रैजेक्टरी होती है बेटा आपके पार्टिकल ने किस तरह का मोशन कर, आपके पार्टिकल ने कोई मोशन किया तो उसने किस तरह का पाथ लिया। ठीक है, कि जैसे कि आप पार्क में सुबह घूमने जाते हो, अगर आपका पार्क रेक्टेंगल है तो आप रेक्टेंगुलर चक्कर काटोगे, अगर आपका पार्टिकल स्क्वायर शेप में है तो आप स्क्वायर काटोगे, अगर सर्कुलर है तो ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम, सर्कल है तो सर्कल। ठीक है, तो आप किस तरह के मोशन में चल रहे हो, ये है ना, उसको बोलते हैं आप किस तरह का पाथ ले रहे हो, उसी को ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, कि आपका मोशन के दौरान आपने किस तरह का पाथ लिया। ठीक है, तो उसी के बारे में इक्वेशन ट्रेजेक्टरी वही बताती है कि किस तरह का पार्टिकल ने पाथ लिया। अब ये बताने के लिए ना दो कंपोनेंट के बीच में रिलेशन होना बहुत जरूरी है। वाई कंपोनेंट ऑफ द पूरे मोशन का जो वाई कंपोनेंट, क्योंकि देखो ये 2D मोशन है, दो दो डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है, एक एक्स डायरेक्शन में होता है, दूसरा वाई डायरेक्शन में होता है। So this is a 2D motion, it takes place in two different directions, so we need to form a relationship between the x component of the motion and the y component of the motion in order to calculate the path followed by the particle. ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करना है, हमने इक्वेशन कैसे बनाना है। देखो हमने सारे प्री डिफाइंड वेरिएबल्स लिख लिए एक्स और वाई के, आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने एक लास्ट में इक्वेशन लिखी, एक्स में जो डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होगी एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसको रेंज बोलते हैं। रेंज को मैंने डिनोट कर लिया एक्स से, अल्फाबेट एक्स इज डिनोटिंग रेंज। रेंज इज डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्पीड इनटू टाइम, सो रेंज एक्स इज इक्वल टू यू इनटू टी। From there I calculated the value for time, which came out to be x upon u. टाइम की वैल्यू वहां से x upon u आ गई। ठीक है, यहां से अब तक मैंने यहां तक समझा दिया, यहां से आगे टाइम की वैल्यू x upon u। अब y डायरेक्शन में you all know in horizontal projectile आपका इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन ये 0 है। भाई y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज -g, दिस इज तो डिफाइंड ऑलरेडी, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी acts in vertical direction, -g होता है। Now I have told you that the displacement in y direction होना तो h चाहिए था, लेकिन h से डिनोट मत करो अल्फाबेट h की जगह, आप अल्फाबेट y से डिनोट करो इस बिल्डिंग की हाइट, क्योंकि जो बिल्डिंग की हाइट है वही तो आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बनेगी। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। You get my point? Vertical direction में how much distance you are getting displaced in vertical direction is equal to the height of the building, because आपको तो drop किया गया है, you have been dropped from the height from a building which whose height is h। ठीक है, तो अब सॉरी, minus y is your displacement, minus y is your what displacement in y direction। नाउ मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इक्वेशन लगाई कौन सी, h is equal to ut plus half at square वाली, ये आपने पढ़ रखी है थर्ड चैप्टर में। s की जगह मैंने रखा है माइनस h, ये h की जगह सब जगह y कर लेना। ठीक है बेटा, ये s h की जगह ना y कर लेना, हर जगह h की जगह y कर लेना। इंस्टेड ऑफ h जस्ट राइट y, इंस्टेड ऑफ h राइट माइनस y एवरीवेयर। सब्स्टिट्यूट द अल्फाबेट h विद y just because ट्रैजेक्टरी ऑफ मोशन का मतलब ये होता है y और x कंपोनेंट रिलेशन निकालना, और अगर मैं h लिखूंगा तो h और x में निकल जाएगा, तो कुछ खास मतलब रह नहीं जाएगा, इसीलिए जस्ट चेंज इट टू y। नाउ इक्वेशन लगा दी मैंने, ut इज इक्वल टू 0t। ठीक है, u 0 है, प्लस ये प्लस इतना ऊपर को लिखा है, ये प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, वाई इज इक्वल्स टू हाफ जी, टी की वैल्यू रख दी यहां से उठा के एक्स बाई यू, तो टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। स्वाहा, खत्म। दिव्या कुछ समझ में आया क्या? यस सर, क्लियर। मैं ऐसा क्या अलग समझाता हूँ दूसरी बार में जो पहली बार में नहीं समझाता हूँ, जरा मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोगों को दूसरी बार में समझ में आ जाता है, मतलब पहली बार में नहीं आता। ऐसे पूछना चाह रहा हूँ मैं, ये नहीं गुस्सा मतलब नहीं कर रहा कि एक बार में समझ में क्यों नहीं आया, ये मतलब नहीं है, बट ऐसा क्या अलग कर देता हूँ आई गेस, या तो आपका कोई पॉइंट मुझे लगता है छूट जाता है, ऐसा होता है ना कि टीचर बता रहा है, आप सुन रहे हो एंड एट अ सडन पॉइंट ऑफ टाइम यू suddenly go into some other thoughts and you are thinking something else while teacher is explaining, so you miss the point. You miss the point at that time when teacher is explaining something and you are in some other thoughts, and that is why you people say that sir you repeat the formula. I hope this is the case. I
थिंक दिस मस्ट बी द केस। और क्या ही रीजन होगा, क्योंकि मैंने सेम ही चीज समझाई है, मैंने कुछ अलग नहीं करा है। और पहली बार में आप शायद स्लिप होकर भी कहीं और पहुंच गए होंगे। ओके, circular motion. Can we start circular motion? Circular motion is an interesting topic. It's a small topic and very interesting topic. थोड़ा सा आप लोगों का सिलेबस जो है डिले हो गया है, so I have to take up your extra classes. So all of you just do one thing in my personal chat. Just text me which time and which days are comfortable to you for taking extra classes. ठीक है, either Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, because Monday, Tuesday, Wednesday we have regular classes. So what is my advice is we will hold up extra classes on either Fridays or Saturdays or Sundays, like that. But Sundays is a holiday in the academies for your preparation and revision. So I don't want to disturb your Sundays. I want extra classes on Fridays and Saturdays so that we can increase the pace of the syllabus a bit. And in the extra classes I will be able to take up some more questions, ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, थोड़ी सी सिलेबस की स्पीड बढ़ जाएगी, तो अच्छा हो जाएगा हमारा। तो बस जरा everybody just message me in the personal chat which day and what time will you be more comfortable if I want to plan an extra class. ठीक है, you all can just do this work. ठीक है, सब लोग कर देना ये, जब भी आपको टाइम मिले मुझको टेक्स्ट कर देना, सर I want extra class on Friday, itne se itna I want on Saturday. So I will see the majority and then I will decide, and then everybody has to follow. Now, kitna time? How much is what's the time? It's 7:06. Circular motion. What is circular motion? When a particle moves in a plane such that its distance from the reference point remains constant, then its trajectory or locus is called as a circle. The motion is called as a circular motion. ठीक है, दिस डेफिनेशन इज इन इंग्लिश, इट इज प्रीटी मच अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीवन, सबको समझ तो आ गया होगा। वो क्या कह रहा है, एक पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल है, एक तिनका चला, अ पार्टिकल इज मूविंग in a plane such that its distance from the reference point, this is the reference point, center O, okay, this is the reference point, its distance from the reference point remains constant. If you are moving in a circle, your distance from the center, the distance, if you are moving along the circumference, अगर आप circumference के along move करो, if you are moving along the circumference like this, so at any point of time, your distance from the circumference is equal to the radius of the circle and remains constant. When you are here also, then you are also r meters away. When you are here, then also you are r meters away from the center of the circle, r meters. Okay, this r can be in centimeters or meters. Okay, so circle का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मोशन जिसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब आप एक कांस्टेंट मोशन चलो, व्हेन यू मूव along a constant motion with reference to a reference point, with respect to a reference point or a central point, इसको आप central point भी बोल सकते हैं, or a central point, then its trajectory or locus is called as circle. Now you all know how a circle looks like. This is how a circle looks like. Okay, circle is round. Anyways, the motion, circular motion, this is the particle, this is the radius, and this is center reference point. पिटारे में और क्या है, सर्कुलर मोशन। अच्छा, अभी तक सब मेरे साथ थे ना, 7:6 ओके। सर्कुलर मोशन में काफी सारी चीजें होती हैं, देयर आर मेनी थिंग्स इन सर्कुलर मोशन, मेनी थिंग्स। व्हाट आर दीज थिंग्स? Angular position, angular displacement, angular velocity, angular acceleration. Now, half of the terms are you have heard before. You have heard what is displacement before in the third chapter. You all know what is velocity. You all know what is acceleration. So you have heard these terms before. It's just that you have not heard them with the word angular. आपने सारी term तो सुन रखी है, angular word के साथ ही सुन रखी है। ये तो प्रॉब्लम है ना, पोजीशन सबको पता है, डिस्प्लेसमेंट सबको पता है, वेलोसिटी सबको पता है। जो आपको नहीं पता है क्या है कि एंगुलर इनके आगे लग जाता है तो क्या हो जाता है, एंगुलर मतलब लगने का मतलब क्या। तो यू कैन मेक आउट फ्रॉम द वर्ड मीनिंग ओनली। Angular means displacement with respect to certain angles, velocity with respect to certain angle, acceleration with respect to certain angle. कुछ एंगल के रिस्पेक्ट में बात चल रही है, एक्सेलरेशन कर रहा है पार्टिकल, वेलोसिटी बढ़ रही है पार्टिकल की, या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का, लेकिन सब कुछ किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, कुछ एंगल के रिस्पेक्ट में हो रहा है, कुछ ना कुछ एंगल के रिस्पेक्ट में हो रहा है।
that is called angular. So starting with the angular position, you can read the definition. इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. The angle made by the position vector OP. You just see the figure here. यहाँ पे figure भी देखो on the right hand side. Just see the figure. I'm not writing anything at this point of time. Just explaining you guys. The angle made by the position vector, angle made by the O vector OP with respect to the origin, with the reference line OX. Did you find the reference line OX? If you're not able to see X, try to visualize X here. X is somewhere. This is Y. देखो, this is Y. This is Y. This will be X. X is the axis. So this is your OX line. This is your OX line standing at point P. Okay, this is not making much sense. Suppose a person is standing at this point. This point is P. A person is standing at this point P in this circle. A person is standing at this point P, and he started. Not started. Just leave it like that. A P point पे एक person खड़ा है. Person standing at point P. This person, how will you define the position of this person? You can say that this person is r centimeters away from the circle. R centimeters away. This person is r centimeters away. Okay, this is the radius. This line is the radius. You can see that the person is radius centimeters away. Radius can be 2 centimeters, 3 centimeters. So the person is r centimeter away from the center point, such that it makes an angle theta. It makes an angle theta with the reference line OX. Okay, you have made a reference line OX. OX is nothing but also radius of the equal to radius of the circle. OX is also equal to radius of the circle. Okay, OX is also equal to radius of the circle. OP is also equal to radius of the circle. But this is just a way of expressing that a person is standing at a point P such that he makes an angle theta with respect to the horizontal reference line OX. You have made a horizontal reference line OX just to define the position of a person. उस आदमी की क्या पोजीशन है, वो कहां खड़ा है, ये बताने के लिए सिर्फ आपने OX बनाई है. ठीक है, OX और OP दोनों ही रेडियस हैं. ये बात क्लियर होनी होगी. ठीक है. So how do you define the position? You define the position that the person is standing at a point P, making an angle theta with the reference line OX, and this is its angular position. So this theta, at what theta? This theta is the angular position. At what theta? How much theta he is standing. Okay. The angle made by OP with respect to theta is always anti-clockwise, in always anti-clockwise sense. So always you have to measure this angle as if कि इसने OX यहां से OX से चलना स्टार्ट किया और ये चलते चलते OP तक पहुंच गया. ओके, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो आपको थीटा का सेंस कैसे लेना है? सेंस ऑफ थीटा की थीटा बना कैसे होगा? हाउ डू यू हैव टू इमेजिन हाउ थीटा वाज मेड? दैट द पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट OX. ओके, और फ्रॉम द पॉइंट X द पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग. कहां गया मार्कर? द पर्सन स्टार्टेड फ्रॉम वॉकिंग कहां गया? दिस from point X and he moved towards the point P. This is what you can imagine. Okay, and while doing this he covered an angle theta. How? You take an anti-clockwise sense of rotation. Okay, this is anti-clockwise. You can see the arrow line which I have drawn. Okay, so theta is always measured in anti-clockwise sense with respect to the reference line OX. ठीक है, OX से anti-clockwise आपको चलना होगा, anti-clockwise की तरफ आपको एंगल लेना होगा. ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे पीछे क्यों आ रहा है. कभी भी आपको डायरेक्शन सेंस बतानी होगा ना कि पार्टिकल ने मूवमेंट कैसे करी. यू वांट से कि पी से क्यू आया. ठीक है, आप कैसे बोलो एक्स से पी गया. आपका थीटा जो बना है ना, उसको सेंटर से ऊपर की तरफ लेके जाना है. आपका सेंट्रल रेफरेंस लाइन है आपका, हॉरिजॉन्टल पे आपने जो बना लिया उससे ऊपर की तरफ मतलब घूमने की दिशा में एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए बस वो. ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट बाय डिफॉल्ट in circular motion anti-clockwise is positive. By default anti-clockwise is positive and clockwise is negative. This is the sign convention of circular motion. This is weird, but it is what it is. We cannot help in this. बाकी तो क्या है, ठीक है ना. I hope angular position is clear to you. What do you mean by angular position? Very simply I have explained angular position. Direction of
Okay, ये तो angular displacement. Now the next part is angle. Oh, I have a telegram message. Wait. Okay. चलिए. Let me just check if you are clear. Angular displacement पढ़ने से पहले. Yes sir. Okay sir. Okay. अच्छा आप लोग रिस्पॉन्ड एक बार कर दीजिए. एंगुलर पोजीशन आपको समझ में आ गया? Did you guys understand angular position? What is circular motion first of all, and what is angular position inside the circular motion? Okay, Deepika and Juveria. Cool. Now I think we can move to angular displacement. Angular displacement. Difference between the two angular positions, theta 2 minus theta 1. Angular displacement is a dimensionless quantity. SI unit of angular displacement is radian. Okay. Now angular displacement is one complete revolution along a circular path. Angular displacement are added or subtracted based on the sense of rotation. Many things are written here. Many things are written here about angular displacement. But what do you have to understand? What do you have to pick up? इसमें से आपको क्या समझना है? Angular displacement होती क्या है? Suppose a particle was standing at this point P1. Suppose a particle was standing at a person was standing at this point P1 and he started walking in forward direction and he has reached a point P2. Okay, he has reached a point P2. So the angle which the person was making when he was standing at point P1 was theta 1 with the horizontal. Okay, when the person was standing at P1 point, he was making an angle theta 1 with the horizontal. But when the same person is standing now at the point P2, he is making an angle theta 2 with the horizontal. Okay, you can see the person is making an angle theta 2. What is theta 1 and theta 2? Angular positions of the person at the point P1 and P2 respectively. Theta 1 and theta 2 क्या है? Angular position है ना उस person की. Angular position है कब P1 point पर P2 point पे. Now displacement, how will you define displacement? Displacement is simply defined as the difference between angular positions. Difference between angular positions. Difference between two angular positions. Difference between two yellow कर लेते हैं इसको. Difference between two angular positions. And the difference is in the form of angles. Okay, because angular position is in the form of angles. So displacement difference in angular position will also be in the form of angles, and these angles are theta 2 and theta 1. Theta 2 is the angle which the particle makes when he's standing at point P2 and he has traveled from point P1 to P2. Okay, so he's making theta 2 at P2. So final angle minus initial angle you have to do. Okay, angular displacement is a dimensionless quantity. Angular displacement is a dimensionless quantity. तो इसको कैसे मैं समझाऊं? एंगल्स का यार कोई डायमेंशन नहीं होता. एंगल्स जस्ट हैव यूनिट्स. Angles don't have dimensions. You have never heard like saying that let's suppose कैसा example दूं आपको. The rain is you remember rain man problem किए थे हमने. So I never say, or you have never read, or you have ever came across the word like the rain is falling at an angle 37 degree or 45 degree with respect to your sorry, with respect to your okay, I'm not getting a good example out of it. कैसे समझाऊं आपको डायमेंशनलेस क्यों होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? देखो एंगल्स की यूनिट होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती. मेन पॉइंट तो यही आ रहा है मेरे दिमाग में. एंगल्स की यूनिट रैड में होती है, लेकिन डायमेंशन लेंथ ब्रेथ डायमेंशंस क्या होती हैं? देखो डायमेंशंस होती हैं, व्हाट आर डायमेंशंस? लेंथ, ब्रेथ, ठीक है, टाइम. दीज आर द थ्री. लेंथ, ब्रेथ, टाइम. या फिर आप कह सकते हो आपका वो कौन सा सिस्टम होता है फोर्स में? क्या क्या होता है आपका? लेंथ होती है एक टाइम होती है आपकी डायमेंशन. वन डायमेंशन इज योर लेंथ, वन डायमेंशन इज योर टाइम, एंड देयर वन मोर डायमेंशन
not recalling as of moment, but आप लोगों ने dimensions वाला chapter पढ़ा हुआ है, okay? So dimensions are always expressed in the form of time, length, area, volume, pressure and force. Okay, mass. The third dimension is mass. Okay, the three main dimensions are in the form of mass, length, and time. You will never see a term for angle in this. ठीक है, इसमें angle term कभी नहीं मिलेगा. So we never consider angle as a dimension. We may majorly consider dimensions when the units or physical quantities are expressed in the form of some length. They are expressing कोई length बता रहा है, कोई physical quantity अगर आपको time का measure दे रही है, ठीक है, कोई physical quantity आपको length का measure दे रही है, if any physical quantity is expressing time, or if any physical quantity is measuring the mass. Okay, these type of physical quantities are said to be dimensional quantities, but rather than them, no such quantity is like angles हो गया आपका is a dimensional quantity. So moving forward, angular displacement dimensionless, ये basically more आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में कर लिया होगा आपने, बट इसका कुछ एग्जांपल मिलेगा तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा. बट आई थिंक आपको एक विजुअलाइजेशन है ना, डिस्प्लेस एंगल्स की कोई डायमेंशन नहीं होती, एंगल्स जस्ट हैव देयर एसआई यूनिट्स. ओके, एंगल्स कैन बी मेजर्ड, कैन नॉट बी डिफाइंड. बेसिकली एंगल्स कैन बी मेजर्ड एंड कैन नॉट बी डिफाइंड. एंगल को आप डिफाइन नहीं कर सकते लेकिन मेजर कर सकते हो. सो दैट इज व्हाई दे आर डायमेंशनलेस. SI unit is radian. Now radian, you all know what is radian. ठीक है, 2 pi rad is equals to 360 degree. This conversion everybody should remember. 2 pi is equals to 360, pi is equals to 180. ठीक है, pi by 2 is equals to, this is conversion between radian and degree. Okay, radian and degree. So 2 pi radian means 360 degree, pi radian means 180 degree, pi by 2 radian means 90 degree. Okay, these conversions you all of you should remember. Apart from this, what's the next point? इसमें next point क्या है? इसको भी रेज कर देते हैं. Angular displacement is one complete revolution along the circular path. Okay, agreed. They are saying, देखो, what are they saying? They are saying you can only say angular displacement if the particle has completed a one complete revolution along a circular path. ठीक है, आप angular displacement कब बोलेंगे? जब your particle started from this point. Suppose this point x, your particle started from this point x and it went along the circumference, along the circumference, along the circumference, along the circumference. Okay, and then he comes back at this point x again. That is called as one complete revolution. That is called as one complete revolution. The point from where you started the motion, you completed the whole circle and then you came back along to the very same point. In that is the meaning of one complete revolution. मतलब कि जिस पॉइंट से आपने सर्कुलर मोशन पे चलना शुरू किया, आप पूरा एक चक्कर लगा के सर्कल का वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तब बोलते हैं कि आपने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लिया है. और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब आप ले लेते हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी हो जाती है बेटा? 2 पाई रैड. वही वो इस पॉइंट में बताना चाह रहे हैं. when you move in a complete circle, that is, you start from point x, you move along the circle and you again come back to point x. In that case your angular displacement is equal to 2 pi radian. ठीक है, ये लीनियर उसकी तरह से नहीं है कि आप क्या करते थे लीनियर वेलोसिटी में. if you started from point a and you again came back from to point a, then in this case your displacement is zero. The displacement is not zero. इस केस में displacement zero नहीं है. Carefully see this. What we used to do in the straight line motion, that we used to say कि एक point से if a person is moving from point A and he travels the whole distance and again reaches back to point A, so in that case displacement was zero in the motion in straight line chapter. But in circular motion, in circular motion, the displacement is not zero. If the particle is coming back to the same point, then it is said that the particle has completed one revolution and the angular displacement is said to be equal to 2 pi radian. 2 pi radian, because radian is the SI unit of angular displacement. ठीक है, angular displacements are added or subtracted based on the sense of rotation. Angular displacement are added or subtracted based on the sense of rotation. What does
they mean largely? इसका मतलब क्या होता है? देखो, eraser, eraser, eraser. In this figure, see this figure. This is the suppose the particle was standing at this point x. Okay, suppose the particle was standing at this point x. वो इस x point पे खड़ा था. If the particle is standing at point x, what is the angular displacement? It is 0 because the motion has not yet started. If the motion has not yet started, the angular displacement is 0. तो particle x point पे खड़ा था, motion start ही नहीं हुआ, तो angular displacement अभी 0 पे है. पार्टिकल जब x पोजीशन पे है, उसको चलना शुरू नहीं किया तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 पे है. नाउ द पार्टिकल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट x एंड it kept moving along the circle. The particle kept moving, चलता रहा, and finally reaches the point P1. Now the particle has reached the point P1, and in reaching the point P1, the particle has covered or traveled an angle of θ1. Okay, particle has traveled how much angle? I'm not saying how much distance. I am saying how much angle, because this is angular displacement. So everything should be in the terms of angle. The particle started from point x and now has reached point P1. He has covered and total angle of equal to θ1. Okay, let's say θ1. And now from this point P1, the particle again starts to move and now has reached the point P2, and the total angle which okay, ये θ2 तो आपको यहीं से दिया हुआ है, बट सपोज करो ये θ2 इन्होंने आपको ना यहाँ इस लाइन से दे दिया, आपको θ2 दे दिया है इन्होंने from the horizontal line. If this θ2 was not given from the horizontal line and the θ2 was just equal to this thing, then in that case आप क्या कह सकते हैं? You could say that the total angular displacement, first of all, angular displacement is denoted by theta. Okay, theta, you are not denote this by theta. So you, in that case, you would have able to said that theta is equals to θ1 plus θ2. Total displacement is equals to θ1 plus θ2. In which case, in the case when this θ2 was not given from horizontal axis, and it would just have been given between the point P1 to P2. Point P1 and P2 hota agar, suppose if the θ2 is the angle traveled by the particle in coming from point P1 to P2. So now at point P2, I ask you guys, what is the total angular displacement from x? Total angular displacement from x. So you will say, sir, total angular displacement will be x, θ1 plus θ2. ठीक है, सेंस ऑफ रोटेशन सेम है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ऐड किया जा सकता है फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए. If the sense of rotation is same, sense of rotation means the direction of rotation, sense of rotation is same, then the individual angular displacements can be added together to calculate the final angular displacement. In this case, if the θ2 is only the angle traveled between P1 to P2, then you can easily say that the total displacement theta will be θ1 plus θ2. Okay, that is what is the meaning of angular displacements can be added or subtracted based on the sense of rotation. आधों को तो बात समझ में नहीं आई. कितने हैं वो आधे बचे जिन्हें बात समझ में नहीं आई? जरा बताएं मुझे. Who. Okay, who has understood? Jaldi. Sir, this is not how you explain this. Prasanna is clear, wonderful. Malini is clear, wonderful. Dinkachika. Oh. Dinkachika. अरे 7:30 हो गए, टाइम खत्म होने वाला है, थोड़ा सा और पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं. नेक्स्ट क्लास किसकी है? स्वयं सर की है ना? अरे यार लेट हो जाएगा फिर, तो लेट कर दिया तो. चलिए. Okay, I'll give you an interesting thing also. Just remember this interesting relationship. See, this θ1 and θ2 is the distance traveled in the terms of angle. ठीक है,
this theta1 and theta2 are the distance traveled by the particle in terms of angle. Angle के terms में particle कितना चला, theta1 theta2 क्या बताता है बेटा, angle के term में particle कितना चला. लेकिन if I am asking you how much the particle has traveled in the terms of circumference, how much he has traveled, okay, let it be some, let's say S, okay, this distance along the circumference traveled by the particle is S, okay, distance traveled by the particle along the circumference, you all know that is this is called a circumference, okay, circumference होती है. तो इसको S अगर मैं बोल देता हूं तो how there is a beautiful relation between this distance traveled along the circumference and the distance traveled in terms of the angle, okay, there's a beautiful relationship between these two, and that relationship is equal to S is equals to radius times this R is radius times theta, okay. So if I'm saying that in traveling from X point to P1 point, a particle has covered a total distance, total angular distance of theta1, So how much circumference distance he has covered? How much distance in the terms of circumference he has covered? He has covered a distance equal to radius times the angular distance. ठीक है, देखो ये तो आपको पता चल रहा है एंगल के टर्म्स में. इट इज प्रीटी एविडेंट दैट ही हैज कवर्ड सम डिस्टेंस इन द टर्म्स ऑफ एंगल, बट it is also very much intriguing that he must have covered some distance in the terms of circumference as well. He has moved from X to point P1. He has moved, and we can clearly see that there is some change of angle. Okay, there is some angle covered, but we can also see that there is some distance moved, and this distance, let's suppose this distance be S. So how do you calculate this S? This S is equal to radius times theta1, or the angle traveled by the particle multiplied by the radius gives you the distance along the circumference. The distance along circumference moved by the particle. ठीक है, circumference के along कितना distance move करेगा? That will be equal to the total angle covered by the particle in reaching this till reaching this point multiplied by the radius of the circle. This R is nothing but the radius of the circle. Radius of circle. Okay. Now there is a thing about direction of angular displacement. This is a detailed topic. I'm thinking we should take up this tomorrow. Or tomorrow, everyone please be on time, because we will do in bit speed, and we'll do this angular displacement topic as well. Angular displacement, I'll give you a brief. होता क्या है angular displacement, सुनते जाओ. In fact, angular displacement को ना आप right hand thumb rule से निकाल सकते हो. ठीक है, angular displacement को आप कैसे निकाल सकते हो? Right hand thumb rule. Right hand thumb rule मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना. Right hand thumb rule नहीं पढ़ा? क्या बात कर रहे हो? Right hand thumb rule I've explained. I hope I've explained you guys. How do you calculate right hand thumb rule? Right hand thumb rule is simply that you see this. ये arrow दिख रहा है आपको? This arrow. This arrow. You keep your fingers of the right hand, okay, in towards the line OX. ठीक है? You keep your fingers of right hand parallel to the line OX. OX line के parallel रखो. Right hand की finger should be parallel to your the line OX. Okay, and then curl the fingers inwards. Curl the finger inwards. Inward means towards point P1. Okay, towards point P1. Okay, you place your fingers on the OX line and curl them inwards. Okay, then curl them inwards. So the direction of curling is your direction of angular displacement. जिस डायरेक्शन में आप कर्ल कर रहे हो वो ही डायरेक्शन आपका क्या है? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, see this hand here. Okay, suppose this is your OX line. So you have placed your fingers along OX and you are moving. Suppose this is a circle. This is a circle. So you have placed your fingers along OX and you are moving like this. So you will curl your fingertips towards inside like this. You'll curl these fingertips towards your inside, and this is your direction of angular displacement. Okay? And this thumb gives the direction of angular velocity. We will study angular velocity tomorrow, but you should remember that this thumb gives you direction of angular velocity, while the curling of the fingers give you the direction of angular displacement. Angular displacement direction is given by curling of the fingers of the right hand.
Okay, I will repeat the rule once again if you are not clear, but just tell me if you got an idea, आपको थोड़ा सा समझ में आया कि कैसे ये रूल लगाना है। OX जो आपका रेफरेंस रेडियल लाइन है उसके अलॉन्ग अपनी फिंगर टिप्स को रखना है, फिर जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो उस डायरेक्शन में कर्ल कर लो। तो वो कर्लिंग जो आपने करी है, कर्लिंग जो आपने करी है वही आपका क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, और जो थंब है आपका उस टाइम कर्ल करने के बाद वो आपको क्या बताएगा, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये छोटा सा रूल है। जस्ट टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टूड all the aspects of today's class and we will take this up tomorrow। से इतना डीप में स्कूल या कोचिंग में नहीं बताया था।